Om Shanti, good morning. So, yesterday we were reading the Murli of Shivratri, where Baba was mentioning the importance of zeal and enthusiasm in Brahmin life. He also told us to check the intensity, whether we always have that constant or whether it fluctuates or whether it diminishes. So, it was a long Murli. We read about 5-6 pages. After that, Baba met the double foreigners and also the Dadis. And then later part of the Murli is Baba meeting the 5 groups. Okay, so again we won't be able to read all the 5 groups today. Maybe we can read the 3 groups, and then the later part you can read at your convenience at home. So let's start with Baba meeting the first group, where Baba mentions the importance of becoming Sahaj Yogi. And the thing to do that is by utilizing each second of the Sangam Yug of the confluence age at its best. Second group Baba meets and Baba focuses on all the treasures, how we would be using them. And the third group Baba focuses on the quality of Dhrita. Okay, so to get the success, how important it is to be determined. So these 3 aspects Baba is focusing on all the 3 groups. One good part of the group meeting, especially in the Murlis from 1991 until 1994-5, you would see that each group in itself is like a Murli. Baba meeting each group because Baba is not probably casually meeting everyone. Like, how are you doing? How are things? And like that. No, he has a very focused message for each group. And he makes sure that he focuses on that main point while he speaks to everyone. And that he very nicely elaborates and summarizes in a couple of pages, which really is very good tonic. So although we are reading 3 groups in itself, it is there are 3 murlis, and Baba very nicely elaborates everything. So let's start reading, and as we don't have English version, let's read Hindi like always. So Baba says, संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहयोगी बनो. सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना. Okay, so Baba, like master of literature, he asks us that summary of all points is to become points ourselves. सब पॉइंट्स का एसेंस हुआ पॉइंट बनना. तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल है? How easy it is for us to become a point. जो सहज बात होती है वो सदा होती है, और मुश्किल होती है तो sometime कभी कभी होती है. Always versus sometime. सबसे इजी सहज क्या है? पॉइंट. पॉइंट को लिखना सहज है ना? जब भी पॉइंट रूप में स्थित होनी नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना? क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो. किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो. फुल स्टॉप लगाना आता है ना? Let's quickly check. Are we able to apply full stop? फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो. जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा. So Baba gives us a beautiful tool. If we are into questions, if we are unable to put full stop, then
This is what Baba says us to do. Whatever happened, whatever is happening, and whatever will happen is the best, would be good. क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए संगम युग है ही अच्छे थे अच्छा, हर सेकंड अच्छे थे अच्छा. I would repeat, हर सेकंड अच्छे थे अच्छा. We can't say that things are not good. So although we might say some of the practical things which we see, oh my God, so much of corona and people losing lives, or there is cyclone, but Baba mentions in one sentence, हर second अच्छे थे अच्छा. Hmm. Now let's apply. When things are not good outside, how does he say that हर second अच्छे थे अच्छा? Think over it. Maybe at the later point of time when we do the churning, you can share your views. इससे सदा सहयोगी जीवन का अनुभव करेंगे. अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है. स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी. अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे. सभी अच्छा ही पसंद करते हैं. अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना? संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाओ. बढ़ाते चलो. ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए. स्वयं सदा संतुष्ट रहो. अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? निश्चय है. फाउंडेशन निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे. पहले स्मृति निश्चय की होती है. अच्छा, संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे. अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट हैं, सदा खुशी में नाचने वाले हैं. हलचल का समय समाप्त हो गया. पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर. गोल्डन फ्यूचर है. So earlier Baba mentioned the importance of putting full stop, and now Baba mentions that if you have nischay, if you have faith, and that is the foundation, then everything will go good. Because we all know that our future would be bright. This is where the first meeting gets over. Second group Baba meets. सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है. सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो. Are we worthy children of Baba? समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगी. समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना. So now Baba is counting on the treasures which he has given us at the conference age. And as we read it, let's examine whether we are utilizing it to the fullest extent or are we wasting it. So Baba says, संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना. संगम का समय यह भी बड़े से बड़ा खजाना है. So the elevated thoughts is the first treasure. Second, Baba mentions about the time of the conference age. सर्व शक्तियों यह भी खजाना है. The powers. सर्व गुण यह भी खजाना है. The virtues. तो सभी खजानों का सफल करना यह है समर्थ आत्मा की निशानी. सदा हर खजाने सफल होते हैं या व्यर्थ भी हो जाते हैं.
quickly let's check all the 4 treasures. Are we able to utilize them always, or we sometimes don't do that? कभी व्यर्थ भी होता है. कितना समर्थ बनते हो है तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त खत्म हो जाता है. ऐसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना, क्योंकि जानते हो कि हर संकल्प की वैल्यू कितनी बड़ी है. संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है. तो 1 सेकंड, 1 श्वास, 1 गुण की कितनी वैल्यू है. Baba didn't add संकल्प. So the four treasures come here. 1 संकल्प, 1 सेकंड, 1 श्वास, 1 गुण की कितनी वैल्यू है. अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है. तो इतना याद रहता है. 1 सेकंड कितना बड़ा हुआ. तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ 1 सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन 1 सेकंड अनेक जन्मों की कमाई का नुकसान का आधार है. गाया हुआ है ना, कदम में पद्मों की कमाई है. 1 कदम उठाने में कितना टाइम लगता है. सेकंड ही लगता है ना. सेकंड गवाना अर्थात पद्म गवाना. इस वैल्यू को याद सामने रखते हुए सफल करते जाओ. So again, when Baba gives us the importance of every second, how would it be really possible for us to put this Srimad in practical? We have so many seconds into the entire day, 24 hours into 60 minutes into 60 seconds, probably 86,400. So of course it won't be possible for us to check each second at this stage, but can we do that at fraction of intervals, or whether we are doing a yoga for 60 minutes or say 30 minutes, can we check that those 30 minutes we utilized were completely waste free? And if we can do that checking, then probably we might go more closer to checking of the other times of the day. So it's a very subtle thing. Many of us may start it, but sometimes we leave that. But that is what Baba mentions, how important each second is. Probably even I don't check that closely, but this Murli gives us that inspiration. And this is another thing which we can discuss later, how subtle we can do this checking. चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति सफल करते जाओ तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे. सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है. बर्थ राइट मिला है ना. कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है. तो सफलता का आधार है व्यर्थ न गवाकर सफल करना. ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन सफल भी किया. कितना कार्य में लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा. जितना कार्य में लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा. खजाने को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना. तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो. So the treasures which Baba has mentioned, do we really search for opportunities to get that into action, or are we able to do that always? हर समय चेक करो, चाहे मनसा
चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो, अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखुट खजाने मिले है वो देने ही है। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। Importance of Baba mentions here. You get a chance to serve a mouth, do that. If not that, by means of mind, mansa seva. Even if not that, then Baba mentions to do that by actions, by bringing it into our practical lives. कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षण होगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना। Let's quickly visualize that we all are the first class sample, masterpiece of in Baba's showcase. And what is the basis of it? जितना आप मनसा से वाणी से सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर से स्वतः ही आकर्षण होंगे। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेंगी व नहीं मिलेंगी, तो यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देगा। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो हाँ जी। So Baba is now mellowing down the tone. Okay, first he asked us that are we really utilizing all the treasures? If not, how are we wasting it? Are we utilizing each second, each shwas? But then children would then become, probably afraid that how would we do it? Then Baba mentions that if you have the courage, definitely Baba is there to help us. हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर है, सोच रहे हैं समर्थ आत्मा हो। यह बार बार याद रखना तो कमाल करके दिखाएंगे ना। अच्छा, अभी जितने आए हो उससे 10 गुना बढ़ाकर आना मुश्किल है तो क्यों नहीं कहते हैं 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा करके लाएंगे। कितनी दुआएं मिलेगी। सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली होती है। उड़ने वाले हो ना, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, so Baba completes the second group here. Let's move on to the third group. वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करो। वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? What is the difference between blessings and effort? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा होता है निमित्त मेहनत और वरदान से सफलता।
So one is considering ourselves that I have to do this, I have to do a lot of efforts in order to achieve it. And other is to understand ourselves as instrument. We are just doing efforts by being instrument, and the vardhan, the blessings is of course of Bap Dada, and that is bringing success. So again, Baba doesn't say that vardhan means not doing any efforts. Baba mentions that doing efforts by understanding ourselves as instrument. इस वर्ष जो यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना। देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। Again, the first group Baba mentioned about question mark. Here also Baba asks us to get rid of question mark. And the second group Baba was mentioning this by way of waste thoughts. Okay. Question mark सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है, इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी, तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है, चाबी है वह हो जाती है, क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। देखो, कोई भी कहाँ वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में से दृढ़ता की चाबी खो जाती है। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती है। पांडवों को चाबी संभालनी आती है या कभी मिस कर देते हैं? अभी सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति व स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। Importance of the value of attention in order to achieve our aim, our targets. कभी कभी एक बात मिस कर देते हो, अटेंशन की अर्थात चाबी को उड़ा देते हो, तो क्या हो जाता है? टेंशन। So attention is the key, and if we forget the key, the A, then that converts into tension. वहां मुश्किल हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन कर देते हो। बाप दादा कहते हैं ना, अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हैं। सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। Beautiful statement. This we can practice as a homework throughout the day. सदा यही स्मृति रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग। Baba is always having his helping hand or cooperation, the hand of cooperation on my forehead. Whatever task we do today, let's use this as a tool to experience success. यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो, तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। जिसके सिर पर सदा बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है या कभी मिट जाता है? जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी है, तो
यह विजय का तिलक भी अविनाशी लगा हो। So Baba compares that like a soul and supreme soul. As we are immortal, even the victory, the tilak of victory is immortal. अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते रखते जाते हो उतना सहज निर्विघ्न बनते हो, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी होती रहती है। खाली रहने में खाली रहने से किसी और की आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो। बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पाव नहीं। So Baba is again mentioning the importance of becoming busy even by way of intellect, not just physically. मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है? रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो? जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े ते बड़े ऊंचते ऊंच हो। बाप तो बच्चों के आगे रहता है ना, तो जितने वीआईपी होते हैं तो क्या करते हैं? टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आप से ऊंचा सारे चक्र में कोई है? तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। Again, we can check. Are we really making the timetable of our mind and intellect? Which are I should be practicing what? Maybe you can share your experience after the Murli. How do you prepare the timetable and how do you follow it? Baba has mentioned this in many Murlis, but some of us, I'm sure, would be practicing. So let's discuss that later. So I'll read the last paragraph of this group. यूके में सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है। स्थान लेने में तो मेकअप कमी पूरी कर रहे हो, लेकिन स्थिति में भी मेकअप कर रहे हो। अच्छी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सभी के बड़े दिल का सहयोग है। यह सहयोग ही सेवा बड़ी कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन देखा गया है कि यूके वाले की हर कार्य में दिल बड़ी है, उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अभी यूके को फॉलो करो, फ्रांस, कनाडा सब फॉलो करो। कभी अभी जिन्हें सहयोगी बनाया है उन्हों को वारिस बनाओ। एक तरफ वारिस बनाओ, दूसरी तरफ माइक बनाओ। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं निकाला है जो इंडिया तक आवाज आए। लंदन का लंदन में ही आवाज है। आप तो विश्व कल्याणकारी है ना। जो बड़ी दिल रखने वाले हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलना ही है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं अपने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोग बनाने में भी बड़ी दिल। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कभी भी कभी भी स्वयं प्रति फॉर द सेल्फ या सहयोगी आत्मा प्रति फॉर द अदर्स संकुचित दिल नहीं रखो। Do not have a small heart or limited heart towards the self or others. That is the importance of having a big heart. Okay? यह विधि बहुत अच्छी है। बड़ी दिल रखने से जैसे गाया हुआ है कि मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़ी दिल वाले हो ना, मैं करने वाले तो नहीं हो ना। Okay, again Baba asks that may which we read yesterday. He again asks us to check that. यह मैं जो करता है
उसको कहेंगे बकरी दिल, और बड़ी दिल वाले को कहेंगे शेर दिल. ब्यूटीफुल कंपैरिजन बाबा मेक्स. शक्तियों की सवारी किसके ऊपर है? बकरी के ऊपर या शेर के ऊपर? शेर पर है ना. आप भी शक्ति से ना हो तो शेर पर सवारी है ना. मैं को बलि चढ़ा दिया ना, समाप्त कर दिया. तो सदा यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड, हर संकल्प को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर समय प्राप्त करते रहेंगे. अच्छा, so here we complete the third group. Fourth group is डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है. Baba gives the importance of becoming double light. And the fifth group is सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो. The importance of ruling the self. Okay, so these two later groups we can read it as home exercise later. And now let's sit in silence for a minute and just reflect. What can we recall from today's Murli? Okay, may I request now everyone to share their interpretation, their points, which you feel is most important to you in today's Murli. What is important, I felt that it's very important to create a effective dincharya for each and every Brahmin, be it practice of Swaman, Murli revision, yoga, whatever. So it should be combined with all this effective action and mansa seva, which will keep us busy and our intellect will be absorbed into all this divine work. So there shouldn't be any waste, any ordinary. That is what is my takeaway now from today's Murli. Thank you, brother. Very well narrated, Murli. Om Shanti. Yeah, very Om beautiful Shanti. point. Yes. Yeah, no, go ahead. You wanted to explain something? Go ahead, brother. I was just adding on to that. So one thing which comes to my mind is we can identify the major tasks which we would be performing throughout the day, and we can associate one spiritual practice with it. May that be Swaman affirmations, or may that be experiencing the five forms, or it could be anything. And we can probably just note that down because it's very easy for us to forget. And at the end of the day, at least for me, at the end of the day, I realized, oh my God, I didn't even remember that what I need to practice. So one good technique which we can do today is just after this class, we can just quickly note down any five actions which we'll be performing throughout the day. May that be cooking food, may that be cleaning home, may that be office or anything. And associate the swamans or whatever practice we need to do. And yes, just check your copy in between that next, what is the task, what is the timetable for my intellect. And then towards the end of the day, we can then analyze that how much percentage was I
able to apply that practice while doing that karma. It could be 5%, it could be 0%, that's okay, but at least we get a start. At least we start analyzing, preparing our timetable, which Baba mentions today. Right. Yeah, I agree with you, Anuban, Prabhu. I agree with that. I also forget. We all forget. That's not a habit. So that's really powerful point. In relation to that only, I thought what caught my attention today was Baba said, when you lose 1 second, you lose multi-million fortune. And I was thinking further, it is not only once, it is eternally. Baba says forever. So I think I want to take that point, and I like to create that timetable and be punctual with it and regular. Means for sure I should do. Thank you. sure. Shanti. So what, of course, the entire Murli, thank you, brother, for the nice narration. But when that point where it came that Maya ko chabi mil jati hai, you know, कि एक second ka, if you're not always connected, I think like I could actually visualize as if the Maya is in some form, you know, with a chabi. So I think that image is like strong, and I think it'll help us like during the day, at least for me, like to see that every time you get distracted, because every second is so precious, and every second that you waste, that Maya is using that chabi. So that's the, you know, picture which I have taken in today's Murli in my mind, so that I'm sure that if I go distracted, that image is going to come back and bring me back, hopefully. And the other thing was, yes, in other Murlis also it says no questions. But I always have this question, to be very honest with you. If you say no questions, and you do have questions, then how do you deal with it? So in my own strategy, what I've done is, if I have a question in my meditation, I just ask Baba, what is the answer? And I generally get the answer. Because if you just say no questions, you're actually stifling your intellect. So you will not be deeply connected at every second unless those questions become still. So my own personal experience is, let the questions come till the time there is no question. And when there is a question, connect to Baba and get the answer directly from him, not from others. Get it directly from the original source. And that is when your question stops. Om Shanti. Wonderful, Arvind. Om Shanti. Am I audible? Yes, Latika, go ahead. I would like to share one point. What here Baba is speaking with group number 1. That is every second of confluence is based. And using this determined thought, we can become easy yogi. Also Baba mentions here that the summary of all points is to become a point and put a full stop. So also here Baba says that whatever happened, what is happening and whatever will happen is good. Like because of this corona period, we all Brahmin can do service, at least through our mind. And if we recall the period before 1.5 year, at that time हमें इतना अटेंशन नहीं था. लाइक तब भी हम में से बहुत से लोग ज्ञान में होंगे और आज भी है. बट एट दैट टाइम condition of our mind was very different, very different. Like मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस है कि एट दैट टाइम आई एम नॉट वेरी स्टेबल. जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो वो चांस हमें अभी मिला है. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस पॉइंट मोस्ट. दैट इज संगम युग का जो है, संगम युग का एवरी मोमेंट इज वेरी यूजफुल एंड वी कैन बिकम इजी योगी. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Yeah.
हमारा जो चिंतन चला आज का मुरली का, वो बताया कि संकल्प मीन्स अवेयरनेस, एनलाइटमेंट, और संकल्प समय सो प्रेशियस, और शक्तियाँ मतलब सशक्त रहना है, ये जो टाइम है। और चौथा गुण मीन्स संपन्नता गुणों से। तो हमने आई ट्राई टू लर्न इट बाय 4S, एंड मोर देन दैट एवरीबडी, यस, हम जितना प्लान बनाते हैं, मोर वी प्लान फॉर आवर पुरुषार्थ, इट ऑल डिसअपियर्स। एंड यहाँ पे जो मॉर्निंग ग्रुप पे हम लोग इतना एनर्जाइज फील करते हैं, उसका रीजन यही है कि सुबह हमारे ऑलरेडी 2 घंटे बड़े पावरफुल बीत चुके होते हैं। तो कल मैं मनन चिंतन, आई वाज जस्ट गोइंग इनटू द डीप चर्निंग, कि मॉर्निंग में व्हेनेवर वी आर talking, we are spreading so much of positive vibrations, till afternoon it's not so. तो अभी लाइक ब्रदर यू वर टेलिंग कि आप 5 काम दो, तो उसको मैं इजी बनाने के लिए काम कर रही हूँ, दैट आई कैन शेयर। डेली आई एम इनटू द वेरी डीप रिलेशनशिप, 7 days 7 different relationships, and that's helping me, stopping me, because जो मन है ना, वो जो माया बता रहे हैं, वो तो माया इतनी prevalent है in environment, it really tempts you, attracts you. You want to be compassionate, it will mislead you, give you kind of those stresses of negativity. तो जो एक relation है, जैसे today Friday is for friend, तो अमृत वेला उसी में गया। फ्रेंड मीन्स जॉय, आई एम कनेक्टेड विद सोर्स ऑफ ओशन ऑफ जॉय, आई एम जॉयफुल, जॉय इज बीइंग एमिनेटेड एवरीवेयर। अभी मेरे घर के सामने, जस्ट ओपन द विंडो, आई नो देयर इज अ डेथ, तो आई वाज जस्ट फीलिंग कि हाउ टू these vibrations of joy reach them. So more than that I felt peace needs to be more emanated. तो ये जो relationship है ये मेरे को थ्रू आउट द डे आई एम समवेयर विद बाबा इन एनी डीप कनेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, it makes me bonded to him, very neat and clean pure bond. It really helps me, and I go into the very depth into it, and it helps me. और जो हर एक क्वालिटी गुण के साथ, like I'm with friend, so other गुण, with mother I'm having peace, with brother I'm having so much of carefreeness, bliss. So like that I'm doing that. So I just wanted to share that relationship, each day a different one, very deep connection, enjoy it, and the virtue also circulated. That's Sangam Yuka Maja. Om Shanti. Wonderful. So, we should, like this, develop some habit or some practice for ourselves. Baba gives us every day a bouquet of so many roses, so many flowers that we can use. Or maybe today in Baba's language, I would say treasures. Baba every day gives us so much of treasures. Now it is on us how much we use it. Either we use it or it loses off. So yeah, but one thing is there that we all have to be, as Baba mentions, attention rakna hai. Otherwise Maya takes away that key. So that is the essence. If you don't have that, if you lose that, then again another day goes off. Baba every day, I sometimes feel that each day in Sangam Baba is giving us another chance of Purusharth. And sometimes I just lose that chance, and I realize that the next morning, oh yes, yesterday I could have been more better. But provided we do that checking, we do that self checking, prepare the self chart, the more we do it, the more we ourselves benefit. Otherwise, it is just a routine day for each one of us. So wonderful points shared by all of you. Really appreciate that so deep churning each one of us we are doing. I would just like to share one thing that about Avyak Murli books. Many of us wants it to have it physically, although we read it virtually on PDFs or Murli is posted in the group, WhatsApp group. But it is always good to have a personal set of books and do our own markings, highlighting the main points, which always becomes handy. Probably even at a later point of time when the technology won't really work. We don't know when that would be. So here is the thing which Madhuban is offering: postal seva, the courier facility.
for not only Avyakt Murlis but even other books, because not since last 1.5 years, not many of us are able to go to Madhuban. So earlier they were not having that much of this parcel capacity, or they were not promoting that, because each center student would get it whenever they got a chance to go to Madhuban. But now it is that they are doing this. So I've shared this number of Niranjan Bhai on chat, 701498636. So they are giving all the 44 books of 1969 until 2017, when Baba did the last Murli. And I think it cost around 1,825 without courier charges. And we have around uh, 20 books of English. Okay, we don't have English Avyakt Murli for all the years. I don't know. They could translate only a few years, or they could not translate. I would say they printed the books only for a few years, or maybe a few years are remaining. So 20 books they are, which would cost 685 without parcel charges. And if there are a couple of centers, a couple of BKs who are connected or living near same center or in the same area, you all can collectively get that. And I think he called me and mentioned that even they have international couriers in case if anybody is needing that to other countries. So you can directly, this is the number of Madhuban itself, which I just mentioned. You can directly contact him, and you can just order whatever books you need in the physical form. So I just thought to mention, because sometimes new souls join and they might not be really comfortable reading on the screen. Probably like me, even I prefer reading on a physical book. So that's all from my side. Let's quickly do a short meditation before we close the call. Let us all go in a second to Param Dham, where our Father is radiating rays of joy. Let's come down to settled regions. Brahma Baba, taking powerful drishti from him, and Baba has a gift for us. He gives us this beautiful golden key of attention. And he asks us, my dear child, today, throughout the day, keep this golden key handy with you. Don't let it go away. Keep it in your pocket. And as you recall in the between, just put your hand into your pockets and remove that key and check, how is my level of happiness? How has it been that I'm utilizing all the treasures? And as you do that, put the key back in your pocket and then get along with your daily tasks. As soon as you complete another task, again remove the key and check. And towards the end of the day, just make a note of how many times were you able to remove the key, check, change, and put it back. With a very beautiful smile, I accept the key from Baba
And I'm aware that Maya is also looking at me. She also loves that key. So I put that key very safely with myself, and back I am into my body for this beautiful day along with Baba, spreading out all the treasures which he has given me to use it for myself and using it for others. Shanti. Thank you everyone for joining. Have a great day. Shanti. Om Shanti. Thank you, Bhaiji. Thank you, everyone.